आज हम करेंगे मैग्नेटोस्टैटिक का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है यहाँ पर मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशन एंड मल्टीपोल एक्सपेंशंस ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट की और इवन देन मैग्नेटिक मटेरियल्स और उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज जो होती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, परमिएबिलिटी काइंड ऑफ, वो सब चीज़ें। तो अगर यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की तरह मैग्नेटोस्टैटिक में बाउंड्री कंडीशन होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक की बाउंड्री कंडीशन और मैग्नेटोस्टैटिक की बाउंड्री कंडीशन को साइड बाय साइड हमने यहाँ पर कंपेयर कर रखा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक की बाउंड्री कंडीशन क्या है कि अगर हम यहाँ पर देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड जब किसी सरफेस को क्रॉस करता है जिसमें कि चार्ज है, तो अगर ऐसा सरफेस जिसमें चार्ज कंटेन है सिग्मा, अगर उससे यहाँ पर हमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्रॉस कर रही है तो इट ऑलवेज सफर फ्रॉम अ डिस्कंटिन्यूटी एंड दैट डिस्कंटिन्यूटी इज इक्वल टू यू कैन कैलकुलेट दैट बाय टेकिंग दिस। तो यहाँ पर हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी सरफेस को क्रॉस कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक जो सरफेस के परपेंडिकुलर और एक सरफेस के पैरेलल। तो जो सरफेस का परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा उसमें यहाँ पर डिस्कंटिन्यूटी आएगी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इस डिस्कंटिन्यूटी कितनी होगी, ई परपेंडिकुलर अबव माइनस ई परपेंडिकुलर बिलो इज मस्ट बी इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एंड I think I just wrote something wrong because it's just not rho. It must be sigma. I just think. Let me just back calculate. So it actually sigma. हाँ, तो it is sigma upon epsilon naught. ये जो है हमारे पास ये डिस्कंटिन्यूटी है जो यहाँ पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट सफ़र करेगा जब ये क्रॉस करेगा, और ये है पैरेलल कंपोनेंट के लिए जब ये जो होगा ये भी कंटिन्यूस रहेगा, ये डिस्कंटिन्यूस नहीं होगा। तो ई अबव और ई बिलो जो होने वाले ये कंटिन्यूस होने वाले इन पैरेलल कंपोनेंट। और अगर हम यहाँ पर बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के अंदर, तो पोटेंशियल मस्ट बी इक्वल टू, ये कंटिन्यूस ही रहेगा पोटेंशियल, बट पोटेंशियल का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस एन इज नॉर्मल वेक्टर दैट इज डिस्कंटिन्यूस, दैट सफर विद डिस्कंटिन्यूस, एंड डिस्कंटिन्यूस इज इक्वल टू बाय माइनस सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर देखें मैग्नेटोस्टैटिक में बाउंड्री कंडीशन, सो बाउंड्री कंडीशन जो होगी, अगर हम यहाँ पर देखें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी सरफेस को क्रॉस कर रही है जिस सरफेस पर यहाँ पर सरफेस करंट है के, तो ये भी एक डिस्कंटिन्यूस सफ़र होगा, बट इन दैट केस थिंग्स विल बी चेंज या रिवर्स। जो हमारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो यहाँ पर कंटिन्यूस होगा, बट इंस्टेड पैरेलल कंपोनेंट यहाँ पर डिसकंटिन्यूस होने वाला है। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कंटिन्यूस एंड पैरेलल कंपोनेंट सफर विद डिसकंटिन्यूटी इक्वल्स टू म्यू के इज सरफेस करंट या सरफेस करंट डेंसिटी। नेक्स्ट अगर हम देखें इसके पोटेंशियल के लिए, तो इसका जो मैग्नेटोस्टैटिक वेक्टर पोटेंशियल होने वाला है वो कंटिन्यूस होगा जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक था, बट इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एन ये डिसकंटिन्यूस होगा बाय इक्वल्स टू माइनस म्यू नॉट के। नेक्स्ट अगर हम बात करें मल्टीपोल एक्सपेंशन मैग्नेटोस्टैटिक वेक्टर पोटेंशियल की, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में था, तो सिमिलर फैशन में यहाँ पर मैग्नेटोस्टैटिक वेक्टर पोटेंशियल लिख सकते हैं। ए आर इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड देन 1 अपॉन आर इंटीग्रल ऑफ डेल आई मतलब डी आई, जो कि एज अ मोनोपोल की टर्म है हमारे पास, देन 1 अपॉन आर स्क्वायर और एक क्लोज इंटीग्रल ऑफ आर डैश कॉस थीटा डी आई, ये डाईपोल की टर्म, एंड देन सिमिलर वे में क्वाड्रपोल की टर्म। इस तरह से हम लिख सकते हैं जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में लिखते हैं। अब हमें पता है कि मैग्नेटोस्टैटिक में मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, बिकॉज अगर हम इसका क्लोज इंटीग्रल देखें डी आई का तो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्लोज इंटीग्रल में जीरो आएगा। दैट्स वाई हम बोलते हैं कि मैग्नेटोस्टैटिक का मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो इसकी वजह से देखिए तो डोमिनेंस जो यहाँ पर मोमेंट आपको देखने को मिलेगा वो यहाँ पर डाईपोल की वजह से यहाँ पर होगा। मल्टीपोल एक्सपेंशन में जो डोमिनेंस में पोटेंशियल होने वाला है वो डाईपोल की वजह से होने वाला है। तो जब भी हम मैग्नेटिक मोमेंट की बात करते हैं दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दिस डाईपोल, not just because of monopole. There is always a dipole. So अगर हम डाईपोल की वजह से देखें कितना यहाँ पर मैग्नेटोस्टैटिक का पोटेंशियल होने वाला है, मैग्नेटोस्टैटिक वेक्टर पोटेंशियल, तो सिमिलर फैशन में जैसे हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखा था विच वॉज अबाउट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड पी डॉट आर कैप ओवर आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम देखते थे। यहाँ पर सिमिलर फॉर्मूला है यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, पी की जगह एम है यहाँ पर, बिकॉज एम यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट है, वहाँ पर पी जो था वो डाईपोल मोमेंट होता था। ये भी डाईपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक डाईपोल मोमेंट है। तो सिमिलर फैशन में यहाँ पर ये है, एग्जैक्टली हम याद रख सकते हैं। अगर हमें एक याद दूसरा भी याद हो जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, मैग्नेटिक डाईपोल मोमेंट हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, दैट इज सिंपल फॉर्मूला एम इक्वल्स टू आई ए, और अगर आपके पास एन नंबर ऑफ टर्न है तो हम यहाँ पर एन आई ए लिख सकते हैं, दैट इज अ सिंपल फॉर्मूला। आई यहाँ पर करंट है और ए यहाँ पर एरिया वेक्टर है।
तो जो डाइपोल का अगर हम देखें, ए डाइपोल जो बनेगा, डाइपोल के मैग्नेटिक मोमेंट जो बनने वाला, मैग्नेटिक पोटेंशियल जो बनने वाला है, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर आर कैप, दैट इज सिंपल। देन अगर हम बी की बात करें, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें डाइपोल के से, तो सिमिलर वे में जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में यहाँ पर हम बात करते थे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का डाइपोल इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू द डाइपोल, दैट वाज अबाउट पी ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब और 2 cos थीटा आर कैप प्लस साइन थीटा थीटा कैप। तो यहाँ पर भी दो कंपोनेंट होने वाले हैं, आर और थीटा कंपोनेंट, एंड दिस इज बाहर वही सेम टर्म आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड दिस इज एम ओवर आर क्यूब एंड देन 2 cos थीटा आर कैप प्लस साइन थीटा थीटा कैप। एक चीज़ बस जस्ट ध्यान रखने, अगर आपको कोई भी एक याद है दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक याद है तो आपको क्या करना है, पी को रिप्लेस करना है एम से, और यहाँ पर एप्सिलॉन को रिप्लेस करना है, जो ये एप्सिलॉन है इसको आप 1 अपॉन म्यू से रिप्रेजेंट कर लो, एवरीथिंग विल बी रिमेन सेम। मतलब यहाँ पर आपको पी को रिप्लेस करना है एम से और एप्सिलॉन को रिप्लेस करना है 1 अपॉन म्यू से, म्यू नॉट से। तो इस तरह से हमें जो वैल्यू मिलेगी हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक से दूसरे में। अगर हमें एक याद है दूसरा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है टॉर्क एंड फोर्स ऑन अ डाइपोल प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम यहाँ पर किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी डाइपोल को रखते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल को रखते हैं, तो उस पर एक टॉर्क और एक फोर्स लगता है जिसको कि हमें बताना है कितना होगा। तो अगर हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पर किसी डाइपोल को रखा तो उस पर लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा, मतलब फोर्स जीरो हो जाएगा, बिकॉज उस पर दो फोर्सेस लगे हैं इक्वल और इक्वल स्ट्रेंथ के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस तरह से जो टोटल फोर्स होगा वो जीरो हो जाएगा। बट अगर हम टॉर्क की बात करें, टॉर्क नॉन जीरो होगा, तो दैट मीन वो जो फोर्स होने वाले हैं, कपल ऑफ फोर्सेस होने वाले हैं, वो उस डाइपोल को रोटेट करेंगे और रोटेट करके अपने डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो जो फोर्स, जो टॉर्क क्रिएट करेंगी, दैट इज एक्चुअली m क्रॉस b। m इज मैग्नेटिक मोमेंट एंड b इज मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम बात करें वही नॉन मैग्नेटिक फील्ड में, तो नॉन मैग्नेटिक फील्ड में दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे, फोर्स भी और टॉर्क भी। तो जो फोर्स होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, सिंपली हमें पता है कि जो u है, जो एनर्जी हम बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी मैग्नेटिक डाइपोल की इन मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज इक्वल टू माइनस m डॉट b। सो अगर हम इसमें देखें, फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव एंड डेल यू, तो दैट इज सिंपली हम यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट कर लें अगर हम, तो u की जगह ये वैल्यू रखेंगे तो ये हमें एक्सप्रेशन मिल जाएगा नॉन यूनिफॉर्म का, कि ग्रेडियंट ऑफ m डॉट बी। m डॉट बी यहाँ पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी की टर्म है। सो नेक्स्ट अगर हम टॉर्क की बात करें, तो टॉर्क का ये कंपोनेंट तो सेम ही होगा m क्रॉस b, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिफॉर्म फील्ड के था, बट देयर इज अ वन मोर कंपोनेंट जो कि इसकी वजह से आया है, बिकॉज अब यहाँ पर फोर्स लग रहा है, तो इस फोर्स की वजह से भी एक टॉर्क का इफेक्ट क्रिएट होगा, तो r क्रॉस f नॉन यूनिफॉर्म। तो ये वाली टर्म भी हमें यहाँ पर ऐड करना है इसमें। नेक्स्ट अभी हमने डिस्कस किया था कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल पर लगती है या स्टोर होती है जब हम मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, एंड दैट इज सिमिलरली यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में था P डॉट ई या माइनस P डॉट ई, तो अगर हम B की मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो यू बी इक्वल टू माइनस m डॉट बी हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं दो डाइपोल अगर आमने सामने हैं या किसी एक ओरिएंटेशन में रखे हैं यहाँ पर, तो उनकी जो इंटरेक्शन एनर्जी वो कितनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इस पर कई सारे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो ये फॉर्मूला में याद होना चाहिए, u इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर क्यूब एंड m1 डॉट m2 माइनस 3 टाइम्स m1 डॉट आर कैप एंड इंटू m2 डॉट आर कैप। एंड सेम फॉर्मूला हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी होता है। अगर हमारे पास दो डाइपोल, इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल एक दूसरे से एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में रखें, पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखें, तो दैट वाज फॉर्मूला रिप्लेस कैसे हो जाएगा, दिस इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब और m1 की जगह p1 डॉट p2 माइनस 3 p1 डॉट आर कैप, m2 की जगह आ जाएगा p2 आर कैप डॉट आर कैप। तो ये सेम चीज़ है, अगर आपको एक याद है दूसरा अपने आप हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैग्नेटोस्टैटिक इन मैटर या मटेरियल, या जो यहाँ पर मटेरियल मैटर होता है उसमें मैग्नेटोस्टैटिक कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे करंट की। तो देयर इज टू टाइप्स ऑफ करंट विच वी कॉल्ड फ्री करंट एंड बाउंड करंट। फ्री करंट इज जस्ट बिकॉज ड्यू टू द फ्री चार्जेस एंड द बाउंड करंट इज जस्ट बिकॉज ऑफ बाउंड चार्जेस। सो बाउंड चार्जेस हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े थे यहाँ पर। तो बाउंड चार्जेस सिंपली यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर रो बी पढ़ा था, जी बी पढ़ा था, सरफेस बाउंड चार्ज एंड वॉल्यूम बाउंड चार्ज। तो सिमिलरली इन बाउंड करंट में भी हम दो प्रकार की करंट डिस्कस करते हैं, सरफेस करंट एंड बाउंड वॉल्यूम करंट। सरफेस करंट अगर हमें यहाँ पर निकालना है तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए मैग्नेटाइजेशन। जैसे हमें यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब हमें बाउंड चार्ज हमें निकालना होता है, बाउंड सरफेस चार्ज, तो उसके लिए हमें यहाँ पर पोलराइजेशन पता होनी चाहिए थी। तो
तो हम सिंपली यहाँ पर निकालते थे। तो उसी तरह से पोलराइजेशन डॉट अगर हम याद होगा तो इस तरह से निकाल दें इसको कि पी डॉट एन कैप। तो सिमिलर वे में यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि एम क्रॉस एन कैप, बिकॉज इज अ वेक्टर क्वांटिटी दैट्स व्हाई देयर इज अ क्रॉस प्रोडक्ट, कि एम यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन है एंड एन कैप ऑफकोर्स यहाँ पर नॉर्मल वेक्टर है, तो द सरफेस जो यहाँ पर नॉर्मल होगा। आप सिंपली यहाँ पर कंपेयर कर सकते हो उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक काउंटर पार्ट से, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के काउंटर पार्ट में सिमिलर वे में फॉर्मूला आप ड्राइव कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पर बाउंड चार्ज डेंसिटी के लिए करते थे, सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए, वैसे हम बाउंड करंट के लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख सकते हैं एम क्रॉस एन कैप। सिमिलर वे में यहाँ पर वॉल्यूम करंट के लिए हम बात करें जे बी, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कर्ल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। जैसे हम बात करते हैं बाउंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो उस केस में हम बात करते थे डाइवर्जेंस ऑफ पी एंड माइनस डाइवर्जेंस ऑफ पी। इन दैट केस यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कर्ल ऑफ एम, सिंपली मतलब डाइवर्जेंस की जगह कर्ल यहाँ पर लेना पड़ेगा, दैट इज ओनली डिफरेंस, और माइनस साइन यहाँ पर नहीं लेना। नेक्स्ट अगर हम बात करें एम्पियर्स लॉ मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटाइज्ड मटेरियल के अंदर कैसे लगेगा, तो सिंस वी नो दैट एम्पियर्स लॉ नॉर्मली ये होता है कि कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम जे टोटल। जे टोटल इज अ टोटल करंट डेंसिटी, और टोटल करंट डेंसिटी इज नथिंग बट सम ऑफ दीज टू, free charge density and free current density and volume bound current density, both are volume current density actually. So अगर हम यहाँ पर ये दोनों वैल्यू का सम यहाँ पर हमें लिखना है एक्चुअली, और बिकॉज हमें पता है कि जो हमारा वॉल्यूम डेंसिटी है, वॉल्यूम करंट डेंसिटी है, उसको हम यहाँ पर जे बी को कर्ल ऑफ एम भी लिख सकते हैं। तो अगर हम इस वैल्यू को बैक सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पर, तो इस तरह से हमारे पास जो एक एक्सप्रेशन आएगा सॉल्व करने पर कि कर्ल ऑफ and then b by mu naught minus m equals to jf, जेबल फ्री चार्ज डेंसिटी, फ्री करंट डेंसिटी। तो ये जो ब्रैकेट में टर्म लिखी गई है b अपॉन म्यू नॉट माइनस m, दिस इज कॉल्ड h। h इज अ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। सो दिस थिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल। यहाँ पर हम h में बात करते हैं, तो कर्ल ऑफ h इज इक्वल टू jf। jf इज अ फ्री चार्ज फ्री वॉल्यूम करंट डेंसिटी। अगर हम इंटीग्रल फॉर्म में इसी लॉ को कन्वर्ट करें तो हमारे पास आ जाएगा कर्ल या क्लोज इंटीग्रल ऑफ एच डॉट डी एल इक्वल्स टू आई फ्री इनक्लोज, कि कितना फ्री करंट यहाँ पर इनक्लोज है, फ्री करंट कितना हमारे पास, वही यहाँ पर एच कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी दैट मीन हाउ गुड मटेरियल इज in order to pass the magnetic field line through itself. So mu can be equals to, can be written as mu equals to mu r mu naught. Mu naught is a permeability of free space, and mu r is a relative permeability, which is nothing but the ratio of mu over mu naught. So mu r is an important factor in order to check where the what is the property of material or medium, how good it is to allow the magnetic field to pass through it. So if we just do that, we just found there is a three type of magnetic material in nature. First is a diamagnetic, second paramagnetic, third is a ferromagnetic. Diamagnetic where mu r is less than 1, and paramagnetic where mu r greater than 1, and ferromagnetic where mu r is a very very greater than 1. So if we just talk diamagnetic material are those material where they are feebly repelled by the magnetic field, and then in that case mu r is less than 1. And in case of paramagnetic material, mu r is greater than 1, not a very high, but there is a slightly greater than 1, and they are feebly attracted towards the magnetic field. But when we talk about ferromagnetic, they are strongly attracted towards the magnetic field, and if for that case mu r is very very greater than 1. So mu r is a factor, mu r is a quantity which indicate that material's magnetic behavior, how it will behave towards the magnetic field. Next we discuss the magnetic field intensity H. So how we'll get that H? H is actually, in previous case we discussed that H is B over mu naught minus M. M is our magnetization. So simply we just write the B equals to mu naught and H plus M. So mu naught time H plus M simply. In free space we know that M magnetization is 0. So then we can simply write that H equals to B over mu naught, and B can be written as mu naught H. If we can, another simple way to write this, for a material B can be written as mu into H. So here mu is permeability of that material, so we can also write it in that way. Here mu naught is free space permeability, so this is a magnetic field in free space. But if we just saying for a material, then we'll use mu instead of mu. So there is a note. So note, what note says that in electrostatic we know that polarization is always have the same direction as electric field,
But in magnetization, in magnetization not always have the same direction of magnetic field. We found there is few materials or some materials which have the nature where the magnetic field is anti-parallel to the magnetization, or the magnetization is in an opposite direction to the magnetic field. Like those materials are diamagnetic materials. Next is a magnetic susceptibility. There is another quantity which do the same job which earlier was done by relative permeability. So this can be defined as magnetic susceptibility, which is the ratio of magnetization over magnetic field intensity, m over h. And here we can just simply write m equals to xi m h. So by doing this simple substitution, by putting b equals to, we know that mu naught h plus m, and b can be written as mu times h, and then simply m can be written as this xi m plus h, and then simply doing this calculation we'll just get mu equals to 1 plus xi m mu naught. And if we just compare with this formula, then we get that mu r is equals to 1 plus xi m. That is an important factor. And now we can again define these three magnetic material, but now in terms of xi m instead of mu r. So for diamagnetic mu r was less than 1, so in that case this will be xi m is less than 0. Then in paramagnetic mu r was greater than 1, so in that case xi m is greater than 0. And in ferromagnetic case the mu r was greater than 1, then xi m is greater than 0. So there is a few note points which we note. First thing is xi m is m over h only valid in a linear magnetic material. That is important point. Like diamagnetic material, which is a linear magnetic material, where the magnetizations is linearly increase as increasing field intensity. But if we just discuss, there is a few material like ferromagnetic material, we found that magnetization is not linearly increased with the field intensity. Then we can use this first order derivative of m with respect to h. This is called xi m. So in solid state, or we found that there is a curve where linear curve for the diamagnetic material where when one axis is h and other axis is m. So there is a linear fashion. Actually I have to just plot this in a way because it's something like that in that dimension, yes, because we know that as h is increasing, then magnetization is just increase in opposite direction, that's why it is negative direction. So we can do it this way, but there is a linear fashion. But in ferromagnetic we know that the magnetization acquired by the material has a very interesting curve which has something called hysteresis curve, which has something like this property, this property. So that's why we say that this is non-linear magnetization, and then we can simply calculate xi m by using del m over del h. Next we'll just see how boundary condition can be implemented on h. So like we just see in previous case where boundary condition on magnetic field B, so we see that the perpendicular component of magnetic field was continuous, while the parallel component for the magnetic field was discontinuous. Similarly, if we just check for the h, so we'll see that there's both component of h are discontinuous if there is a magnetization. So we know that, let's take a first condition. So the perpendicular component of the h is discontinuous if there is a discontinuity in magnetization. So h above perpendicular minus h below perpendicular is equals to m above perpendicular minus m below perpendicular. That means if there is a discontinuity in m, then there is a discontinuity in h, perpendicular components. So this is how it works. And for the parallel component, we see that there is always a discontinuity if there is a free charge, or free current, free surface current. So if there is a free surface current, then we'll found that the parallel component of the h above and the below has a discontinuity by kf. Kf is a free surface current. So this is the theory part. Let's discuss on problems.
So now discuss the problems. So in very first problem, they ask a small magnetic needle kept as origin point 0 0 with a magnetic moment along the x-axis. Another small magnetic needle is set as the point 1 1 and free to rotate in xy plane in equilibrium angle theta between their magnetic moments such that. So in that case, what is there? They have given a magnetic moment m1 which is at 0 0, that is origin point, and directed towards x-axis, and there is another magnetic moment which is m2 which is at this any random orientation, but this is placed at the another point, this is 1 1. So what we have to find, if there is an equilibrium condition, then what is the value for the theta, and theta is actually what? Theta is actually this angle between this m1 and m2. Since m1 is in this direction and m2 is in this direction, then this angle is theta. That is what we have to find for the equilibrium case. So how we'll get that? We'll just find first the interaction energy between these two dipoles. So we'll use that formula which we discussed in a just before. So there is a formula mu naught upon 4 pi r cube, and then in bracket m1 dot m2 minus 3 times m1 dot r cap into m2 dot r cap. If you just simply and carefully looking into the picture, so we see that m1 dot m2, so m1 and m2 has an angle theta, so this m1 dot m2 is equals to m1 m2 cos theta, and then in next part m1 dot r has a 45 degree angle, so I just simply write m1 cos 45, and m2 dot r cap, so this angle is nothing but theta minus 45, so I just write m2 cos theta minus 45 degree. By just doing this simple calculation, taking this m1 m2 common and just putting outside this, I just simply write this way: cos theta minus 3 by root 2 cos theta minus 45. And since I know equilibrium state, for equilibrium state the potential energy must be minimum, so I'll just simply doing that del u by del theta equals to 0. By doing that, I'll just get this relation, and by simplifying from this relation, I'll just get tan theta equals to 3. This is the option C is the correct answer. Let's move to the next question. What they say that rotating spherical cell of the uniform surface charge and the mass density has total mass m and the charge q. If the angular momentum L and the magnetic moment mu, then the ratio of mu and L is. This is a very simple question, but we'll first look this problem by the proper method and then doing solving this problem very short trick. So we have to calculate ratio of mu and L, where is mu is a magnetic moment and L is a angular momentum for the spherical cell, which has uniform surface charge and mass density has total mass m and total charge q. So first we'll calculate we'll calculate mu. So calculate mu, we need mu because we know that mu equals to I times A. I is the current, A is the area. So to get this current, this mu, we'll just do one thing. We'll just know that because this surface is moving or rotating with this uniform velocity omega, so we'll just take a small strip of this material and or call it a surface element dA, and then check how much of the current is generated when it is rotating. To do that, we just say this is the formula, this I equals to dq over dt, or T simply. dq is a charge which is in this area dA, which is equals to mu dq equals to sigma times 2 pi r sine theta r d theta, and T is actually the time period for that revolution. So for one revolution, I know that time period is equal to 2 pi over omega. And by doing this calculation, I just get the I equals to sigma omega r square sine theta d theta. Now I have to calculate d mu. So d mu is actually the magnetic moment due to this small element, which I write dA. So it is equals to I dA, because I know that mu is equals to I times A. I is a current and A was area. So now if I just doing this calculation, I'll just get d mu, and if I'll just integrate it to over the surface for theta from 0 to pi, then I'll get the total mu, which is equals to q sigma r square over 3. Now I have to calculate the angular momentum. Since I know that angular momentum L is equals to I omega, here I is moment of inertia. For the spherical cell, I is always equals to 2 by 3 mr square,
and then there's omega. And then when I just divide these two terms, I'll just simply get mu over L equals to Q upon 2m. And this is a very important result. You must have to remember this. This is called gyroscopic ratio, and this is always equals to Q over 2m. That means the ratio of magnetic moment mu and angular momentum L is always equals to Q upon 2m. Q is the total charge, m is the total mass. This is an intrinsic property which is valid to everywhere. It is also valid for electron also, so it is valid for every case. Next we will discuss another question. The stationary magnetic dipole m equals to m k cap placed above the infinite surface carrying a uniform surface current J current density k equals to k I cap, the torque on the dipole. This is a very simple question. We have to first given that there is a magnetic moment which has a directed towards upward direction, that means jk direction towards z direction, m k cap, and the current is in the x direction, that is k equals to k I cap, and we have to calculate the torque on the dipole. To get the torque, what we need, because we know that tau is equals to, what is tau equals to, that is m times m cross product with b. So we know m, but we don't know what is a b, and to calculate the b we just simply know that due to the infinite conducting plane there is a b which is equals to minus mu naught over 2k, and the direction is minus j cap, which is simply calculated. So now we'll just calculate torque by using this formula, tau equals to m cross b, and just by doing that we'll just simply get torque tau. So this is let's move towards the next question. Next question says that a loop of radius a carrying a current I placed in a uniform magnetic field, if the normal to the loop is denoted by n cap, the force force F and torque T on the loop are. So simply we have to calculate force F and torque tau on a loop which is placed at the uniform magnetic field. So we'll discuss previously that if dipole is placed in a uniform magnetic field, then force will be zero, because dipole experience equal and opposite forces, so the total forces will be zero. And but torque was not zero, and torque can be calculated by this formula, tau equals to mu cross b. So here mu can be written as I times a. A means area of the surface or a loop, and to calculate the area we just use the area of circle, that is pi a square, and mu can be written as I pi a square n cap cross product with b. The answer will be A. This is answer A. So this is all about